Hi everyone, this is John from Civil Center. Welcome to our channel. As we know, Civil Center is continuously working with the vision to guide civil engineering students and professionals. And for that, we keep making videos on different software and on different training programs related to civil engineering field. So, what are we going to learn in today's live session? Today, we are going to learn how we can render a 3D model in Lumion. So I'm just going to keep this live session bilingual. So if any one of you has any question, you can simply ask that in Hindi or English, and I'm here to answer all of it. So it is not that you can just limit your questions to only 3D modeling or rendering. You can ask questions related to any particular field in civil engineering. So आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, जैसे कि आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होगा या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप सिंपली उसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसमें यानी कि इस लाइव सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि हम लोग लूमियन में रेंडर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर करके रखी हुई हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो गाइज अभी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड किसी को भी कोई भी डाउट होगा वो सिंपली यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पूछ सकता है एंड मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग हेलो व्यूअर्स, सो यू सिंपली you can just write your comments over here like that. Okay, so ये हम लोग का लूमियन सॉफ्टवेयर है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मॉडल को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे पहले के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले एक 3D मॉडल जो है वो क्रिएट करना होता है। इस मॉडल को इस तरीके से हम लोग जब 3D मॉडलिंग कर लेते हैं और इसके एक्सटीरियर पे काम करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग की हुई है। यहाँ पे ग्रूव्स हैं, देन आपकी क्लासेज हैं, देन आपके हैंड्रेल्स हैं, यहाँ पे अलग से प्रोजेक्शन भी है एंड यहाँ पे एक जाली लगा हुआ है। सो इस तरीके से हम लोग को सारे के सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग का गेट है और यहाँ पे भी हमने गेट में टेक्सचर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कलर फिल कर दिया है। तो नॉर्मली दो तरीके होते हैं जब आप कोई रेंडर निकालना चाहते हैं। पहला तो ये कि आप कोई एक रैंडम सा टेक्सचर यहाँ पे यूज कर लीजिए और उसको जाके फिर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका लुमियन हुआ या फिर वहाँ पे कोई और आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि वीरे यूज कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीरे का एक्सटेंशन भी यूज किया हुआ है। बट रेंडर से जो रेंडर्ड इमेज की जो लुमियन है उससे अगर हम लोग रेंडर करेंगे तो उस इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं लुमियन यूज करता हूँ। एक डिफरेंस ये भी है लुमियन और वीरे में कि हम लोग का वीरे जो है उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी की डिमांड नहीं होती है, लेकिन लुमियन के लिए हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी चाहिए होता है। ओके, सो अगर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी है तो आप उसका लुमियन का यूज करें। एंड अगर आपके पास एक ऐसा पीसी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, जिसमें कि आप स्केचअप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक गेमिंग पीसी नहीं है, तो उसके लिए आप वीरे यूज कर सकते हैं। और वीरे इंस्टॉल करना बहुत इजी है। अगर आप में से किसी को वीरे इंस्टॉल करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। ओके, सो लेट्स सी हमारे पास कोई व्यूअर है या नहीं। सो राइट नाउ हम लोग के पास 3 व्यूअर्स आ चुके हैं। सो व्यूअर्स, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा 3D मॉडलिंग से या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, देन आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3D मॉडल हम प्रिपेयर करते कैसे हैं। तो इस 3D मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो है पहले रेफरेंस इमेजेस सिलेक्ट करने होते हैं, जो कि आप यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिफरेंट रेफरेंस इमेजेस की हेल्प से इस 3D मॉडल को प्रिपेयर किया है और उसके लिए हमने इन दोनों ही रेफरेंस इमेजेस को पहले मर्ज करके एक फाइनल मॉडल तैयार किया है। तो इसके बीच में एक स्टेप होता है रफ स्केच ड्रॉ करने का, तो वो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे सिविल सेंटर से तो आपको वो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे कि इससे रिलेटेड हम लोग के पास प्लान्स क्या है, उसके बाद हमारे पास जो
3D मॉडल क्रिएट होता है तो वो कैसे क्रिएट होता है, आप कैसे मॉडलिंग करेंगे, क्या क्या शॉर्टकट्स है 3D मॉडलिंग के, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और अगर आप हमारे प्रोफेशनल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हैं जहाँ की हमारे कोर्स का नाम है G+1 बिल्डिंग 3D मॉडलिंग यूजिंग स्केचअप। एंड इस कोर्स में हम लोग 3D मॉडलिंग के सारे माइन्यूट डिटेल्स को सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग स्केचअप और लूमियन के कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेजेस को रेडी करेंगे। सो हम लोग का 3D मॉडल तो ऑलरेडी रेडी है, लेकिन हम लोग का जो रेंडर करना है वो बाकी है, और वो हम लोग आज के इस लाइव सेशन में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। उस रिकॉर्डेड सेशन में आपका मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, एंड रिकॉर्डेड सेशन में आपके न्यूमरस वीडियोस रहेंगे। सो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि 30 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं। तो जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी वीडियोस मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्डेड सेशन में यहाँ क्या होगा कि वहाँ पे आपको उन वीडियोस से रिलेटेड जो है आपको जितने भी डेटा है, जैसे कि आपका आर्किटेक्चरल प्लान हुआ वो भी आपको दिया जाएगा, या फिर रेफरेंस इमेज हुआ, वो सारी चीज़ें भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका कोई भी सवाल होगा वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन हमारे कोर्स के बारे में। ओके, हमारे पास एक कमेंट है, वेयर आर यू फ्रॉम? Okay, we are located in Bhubaneswar, and if someone is willing to find us, then you can simply just Google about Civil Center, okay, and over there you can simply find our address. Okay, so have to just look for Civil Center over here, and you will see that we have our address over here. Okay, so you can also use the Google location and everything, so you are smart enough to do that. So आप बस सिविल सेंटर को सर्च कीजिए एंड आपको हमारे बारे में हमारा लोकेशन भी मिल जाएगा। ओके, सो इट इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर। आई गेस आई हैव आंसर्ड यू। ओके, नेक्स्ट जो है मैं आपके चैट सेक्शन को ओपन रखता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ पे इजीली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग रेंडर करेंगे कैसे। तो हम लोग का लूमियन ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपने मॉडल को। ये इंपोर्ट करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए मैंने उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट मैंने इस मॉडल को इंपोर्ट करने का जो प्रोसेस था उसे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। सो आपको मैं एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि कैसे इसे इंपोर्ट करते हैं। सो फॉर दैट आई नीड टू जस्ट ओपन अप अ फोल्डर ओवर हियर। लेट्स गो टू the desired folder, and from there you can see how you can import this whole model over here. Okay, so just to save the time मैंने इसे already import कर लिया था। and see, आपको पहले Lumion को इस तरीके से open कर लेना होता है, and I'm just going to put it fast forward so that you can have a better understanding of all this thing. ओके, सो लूमियन जो है आपका ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो आपको यहाँ पे पेशेंसली वेट करना होगा कि लूमियन कब ओपन हो जाएगा। और उसके बाद एक बार ये ओपन हो जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग के डिफरेंट लैंडस्केप्स आ जाते हैं, और आपको किस लैंडस्केप में काम करना है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन लैंडस्केप है, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो प्लेन लैंडस्केप को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट मॉडल का हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ से जाके हम लोग मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड उसके लिए हम लोग अपने डिजायर्ड फोल्डर में जाते हैं, और वहाँ पे जाके मॉडल को इंपोर्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्ली उसे प्लेस कर देते हैं। सो डैट इज ए सिंपल स्टेप। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा वो ग्राउंड के अंदर चला गया था, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग उसका हाइट पहले सेट कर देते हैं। आई गेस इंपोर्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द रेंडरिंग पोर्शन। ओके, so do you recruit civil engineers for your firm? Sagar, we do recruit the civil engineers for our firm, but right now we are not open for the employees. However, we are open for the like interns. So if you want to just enroll yourself as an intern, then you will find a link on our Facebook page over here. So
actually you will have to just look for the Facebook page of Civil Center, and if you will just scroll down a little bit, then you will find that we have a vacancy for the internships. So from there you can just look for what are the requirements of the interns, like here are the requirements mentioned over here, and you can just look for the that. Okay, next thing is that the last date of apply is 35 and 2021, that is 30th May, but right now we have extended the date to like 3rd June. Okay, so we are open till 3rd June. So I'm just going to release another portion, or you can simply just start from here. So you can simply fill the form on this given link, and after that our team will just filter out your CV. If your CV is selected, then our team will call you for the interview. Okay, okay, I guess I have answered Sagar as well. Now let's do the rendering portion over here. Okay, so first of all I will have to set the sun, which I have already did, but I can just play a little bit with the intensity of the sun over here. Then I can again just set what kind of clouds I want in my model. Okay, and I can also define how much of the cloud I want over here. Okay, so over here you can see the clouds are set now. So I have chosen for a clear sky. Let's see. Let's keep the clouds this much for now, and after that we can also change it. Okay, so now I'm just going to provide the materials to this model. Okay, so whenever you will just choose any color, then you will see that all the portions of the same color has been highlighted, and from there you can just reduce the reflectivity and the gloss and everything, or you can simply choose the color from where you have saved it. Okay, so I have all the colors saved over here, so I'm just going to pick the color from here, reduce reflectivity and other things, and then I can just click on save. So over here you can see I have missed this particular pillar, so I'm just going to make it same as all other. Okay, so I will provide it with the same color. Now it's time to provide the color to this one. So again I can pick the color from my codes over here, and then I can simply reduce the gloss, reflectivity and relief. So for that you can either drag it, or you can simply just click over here at the 0 position, and you can see this is now looking decent. Now we have to provide the texture at these places, that is around the borders of the window. Okay, so for this extension I have a different text roller, so I'm just going to place this one. Now I'm just going to get rid of the reflectivity and the relief, and now I'm going to zoom a little bit to this portion so that I can have a better view of it. Now I'm going to set the scale. So see, working with the color is very easy, but working with texture is a little bit tricky. So I will have to just keep on increasing the scale till I find the perfect scale over here. Okay, I guess I'm close. Let's reduce it a little bit. We can also take the help of the model. So we have almost 3 blocks over here. So let's reduce it to 3 to 4. Okay, so now you can again use the more options, and over here you can use the position. Now you can just start with Z offset. Let's do the Y offset.
Yeah, now it's placed perfectly over here. So I'm just going to check the other locations too. Okay, so we can see it has been placed end to end at this portion. And now let's observe for this portion. So it is not perfect at this portion. So we can just try with the Y offset and try to place it perfectly. Yeah, now it's placed perfectly. So let's check it for the other windows also. So see, all you have to do is to take care of the perfection in your model. Okay, rest everything is fine over here. Now for the movement, I'm using the arrow keys and the right button on my mouse. Okay, now I'm left with this color, so I'm just going to provide the color over here. Now when it comes to choosing the color, then I'm using the colors from the Asian Paints. So it is smoke in 0616. So you will have to simply go over there to the website of the Asian Paints, and from there you can select the colors. Okay, now let's see if you have any question. Okay, so viewers, there are seven viewers with me, and viewers, you can simply ask your questions over here, and I'm here to answer you. Okay, so आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप सिंपली पूछिए, एंड डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चंस. अब हम लोग मटेरियल्स में जाते हैं और वहाँ पे अब हम लोग को सेट करना है ग्लासेस को. सो ग्लासेस को सेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे ग्लास सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम लोग इंडोर में भी ग्लासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक आपके इंडोर में भी आपके पास ग्लासेस का ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास फैब्रिक है और यहाँ पे ग्लास है. सो धीरे धीरे इस लाइव सेशन में मैं ट्राई करूँगा कि जितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो पाए. सो मैंने यहाँ पे एक प्योर ग्लास को पहले सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और इसमें जो है ग्लास का कलराइजेशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे सेट कर सकता हूँ. तो ये तो हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे जाके ग्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से एक ग्लास को कस्टमाइज कर सकते हैं. ओके, तो पहले हम लोग रेफरेंस इमेज में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे किस तरीके के ग्लास को यहाँ पे यूज किया गया है. सो इट इज नॉर्मली अ ट्रांसपेरेंट ग्लास with a little bit of greenish plus bluish shade over here, and let's see in this one. So this is a transparent glass with blackish shade. So हम लोग इन दो ग्लासेस को कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो कलर है हमारा ग्लास का वो हमें मिल जाए. ओके, उसके बाद पहले तो हम लोग ग्लास के कलर को ही फाइंड आउट कर लेते हैं. इंडोर ग्लास को यूज करेंगे. देन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ग्लासेस के डिफरेंट मटेरियल्स को चूज कर रहे हैं. ओके, सो हम लोग पहले ग्लास मटेरियल को यहाँ से चूज करेंगे. अगर हम लोग को यहाँ पे कोई परफेक्ट ग्लास नहीं मिलता है तो हम लोग जाके आउटडोर में एक परफेक्ट ग्लास को ढूंढने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे भी आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जो कि ग्लास में है. एंड फॉर द हैंडरेल्स we can use this kind of glass over here, or if you want to keep it plain then you can use this shade too. So let's take the help of reference image over here. Okay, so we don't have any kind of glass in the handrails. Okay, we are going to look for such a glass.
So let's go for this one. Double click on this. Let's go for the RGB. And try to place such a glass. Okay. Now for the reflectivity, you can just go for changing the values. Okay. And wherever you find the reflectivity to its best, you can just keep that. So let's keep the reflectivity around this one. If you want to increase the internal reflection, then you can also do that. Opacity can be provided a little bit over here. Now let's look at from a little far distance. Okay, it is changing the glasses over here in the windows too. So we are going to just use this. So let's use the glass in the window. Let's try to keep this at 12.5 with internal reflection 0.4. Save it. Do the same for the other classes. Outdoor. Then pick the glass. This one. In the outdoor, we are working with the second class, and over here in the outdoor we are working with the second class. Let's see what has been changed. I guess the thing that has been changed is the intensity of the sunlight and the height of the sun, but we will try to make it similar. Okay, now it's time to work on the handrails. So let's take the reference from the reference image itself. So we don't have the glass handrails over there, but over here it is black. So we can just go with black in this one. It's just
or we can again work with the texture itself, or we can simply increase the colorization also. I guess this much black is enough. You can see how these glasses are reflecting the sunlight. Okay, so all the bars have been selected, the glasses have been selected. Now it's time to work on this one. That is our door. Let's check if anything else is being selected over here or not. Okay, no, it's just the door. So I'm just going to provide a little bit of the metallic texture to this one. For that, I'm just going to go for aluminum, and from there, I'm just going for metal. Let's choose this one. Play a little bit with the cross, reflectivity and relief. Zoom in to check. Okay, I'm good with this texture. Now over here I can find the texture of the wood, so I'm just going to provide it with the texture of the wood also, or let's try with the metal first. Let's try to provide this one. Let's zoom a little bit. Yeah. Let's increase the colorization. Let's make it a little darker. So we will have to place the color like this. So I'm just going to find out the perfect texture for this one. I guess this much of it is good. Now let's have a look from a far distance. Now we are left with, I guess, just one thing. I guess two things. One is this glass and another one is this. And then I guess we're also left with that material. So let's do the change for this glass too. Okay, Gaurav, we will do that. Okay, by the time, if any of the other viewer are also having any kind of question, then you can simply ask that. And Gaurav, for you, like if you are having any difficulty, then you can simply ask your question in this live session regarding the Lumion, and I'm just going to answer that. Okay.
Okay, now let's just start changing the metal in this window. So for that we are going to have a little bit of the metallic texture. So we are left with two more glasses and this metallic texture over here. So let's deal with this one first. Let's go to the outdoor. Over here look for metal. Then you can have different metallic textures over here. And we want a little bit of color like this. So let's zoom in over here. Let's decrease the gloss. Let's try another texture. Yeah, it is better than the previous one. Okay, no. Okay, so now you can see it is already giving a decent view to our model. Okay, so now what we are going to do, we are going to change the classes over here. So now we can take the help of the reference image. Jaydan Sahu is asking, bro, any flat at PVC art? Yes, Jaydan, आपको अगर फ्लैट चाहिए होगा तो आपको हमारी टीम से कंसल्ट करना होगा. तो यहाँ पे जो मेल आईडी दिया हुआ है, आप इस मेल आईडी पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा. I guess, yeah, over here you can see a mail ID. You have to just drop a mail on this one, okay, and our team will connect with you and they will let you know if there are some flats over there or not, okay. ओके, सो अभी हम लोग को ये ग्लास चेंज करना है, तो हम लोग एक बार ग्लास का रेफरेंस ले लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कैसा ग्लास चाहिए. तो आई गेस यहाँ पे हम लोग को एक ब्लूइश शेड का ग्लास है जो इस रेफरेंस इमेज में है, एंड जो दूसरा रेफरेंस इमेज है हमारा, वहाँ पे भी a little bit of the bluish shade is there. So this bluish shade is appearing this much blue because of the reflection of the sky, and over here you can see this bluish shade is like the natural shade of that glass. Okay, so we are going to work with that one. Okay, so now we have to just work with the glass. So I'm just going to select the glass, go to enter. Over here I can look for the glass, then I'm going to try a bluish shade. So let's see. Yeah, I have this blue glass over here where I can increase the reflectivity, opacity, and everything is already high. So let's get closer to the glass and let's see how it's appearing.
So let's try to bring it to this color. For that, I can just go to RGB, and let's increase the reflectivity a little bit, bring down the colorization, reduce the internal reflection, opacity, double-sidedness, glossiness is too much over here. Frostiness can also be reduced. A scale will not affect this much. Okay, now let's click on save and let's see it from a distance. Okay, let's change the height of the sun. Intensity of sunlight can also be reduced over here in order to get a better view. And then we are going to change this glass. So this glass is mostly working as a skylight. So we are going to keep it like that. Go to indoor, then glass, and then we are going to have the same glass as the previous one with a little bit of modifications. Let's try this one. Colorization 0.7, reflectivity 7.6, 0.8. तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये 0.7 है, ये 0.6 है. तो हम लोग सेम पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. So we can just take the reference from here. Okay. 0.3 and then 0.3, 0.5. Let's reduce the frostiness too. For now, let's save it. And now it's time to take out the render of this one. And let's see what kind of image we are getting. Okay, so that will be the step where we are going to just check the things.
Okay, so let's go to photo, and from here you can just set a view first. Try to keep things in the middle, that is your object. Try to keep this one straight. From both the vertical and the horizontal point of view. Horizontal is good. And now it's time for the vertical one. Okay, now let's take out the render. So we will just start with a small resolution. Let's name it 1, or you can say trial 1, and save this one so that we can check out whether we are moving in the right direction or not. Okay, so obviously the final render will take some time, like it may take 2 to 3 hours over here, but for now this will just suffice our need. So let's see what we have got. So this is our trial 1. Okay, so this is the render that we are getting in our Lumion. Okay, so we need to set the views over here. So that is the one thing that we are noticing over here. Then the glasses need to be worked out yet, because this glass is in the shadow, so it is not getting very much of the exposure, and these glasses are looking a little different. So we can do things like we can just keep the plantation in the front of the building so that it can get a better view. And again, we have these colors are good over here, and the grooves are properly visible, so that's not an issue. If I just set the view in the right direction, then it will just start working. Okay, then here we have used the metallic texture, so it is also giving a good appearance over here. If we will just go for the high quality render, then it will just like make it look a lot better than this one. Okay, so guys, I think you have already learned the basics of how to work in the Lumion. Now you have to just practice, and all the things that I have to use, I've already used in this project, but I have to just be a little precise with the specifications, like how to set the classes and how to just set the view. Okay, so we are going to learn that in some other training program. Now let's have some comments. Sir, how can we rotate the screen in Lumion? Okay, to rotate the screen in Lumion, you can just Gaurav, this is for you. Let's go to build, and over here you can see I'm just using my mouse scroll button. If you want to rotate it like this, okay, like if you want to a little displacement over there on the screen, if you want to like set it in a better way, then you will have to use the right mouse button. Then you have 4 keys on your keyboard: A, W, S and T, and from that you can also use it to rotate. So if you want to go for the precise rotation, then you will have to use the keys like A, S, D and W on your keyboard, and then the right mouse button. Okay, so this is how you can simply rotate over the screen. Okay, like I'm just using it. So to have the precise rotation, you will have to go with that. And if you want to go with the zoom in or zoom out, then the scroll button is here. However, if you will just keep the scroll button pressed, then you will again have the feasibility of rotating the model. Okay, so that is also done using the scroll button. So there are basically 3 things that you can use. First, the scroll button of your mouse. Second, the
right button of your mouse, and fourth, the four keys on your keyboard, that is A, S, W and G. Okay, so these are the three tricks of rotating your model in Lumion, but you will need a lot of practice in order to do it. So that is a different thing. Now let's take another comment. सर चैनल पर रहेगा वीडियो? यस, यश परमार, ये वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे रहेगा, सिविल सेंटर के चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा. हाउ टू यूज रोड इन फ्रंट ऑफ सीन. ओके, yeah, if you want to use the road in the front of the scene, then you can either use the landscapes in the Lumion, but that will go a little tricky. So it is better to just model the same in the SketchUp, and after that, like it is not modeled over here in SketchUp, so you can simply model it in SketchUp and you can just change the material in the Lumion. Okay, next question. Do I have a scroll button alone to use ASW2? No. You don't have to use the anything alone. If you are using the scroll button, then that will suffice work a little different. That is, the work is little different. Like if you will just press the scroll button and you are moving it to the left, then it means that you are standing at a position and you are looking to the right of the window. If you are dragging your scroll button to the right, like your position is same, you are just turning your head to the right. Okay, if you will just slide it to the left, then that means you are at a particular height, but like you are standing in the front of the building, but you are looking at your left. Okay, so to look left, you have to just slide it to the left, and to look right, you will have to simply slide it to the right. Okay, so that is how it works. And this symbol, you can see, this is a symbol of the camera. Okay, the let me put it in the color area. Okay, over here you can see this is the symbol, and this is the symbol of the camera. Okay, so you will have to simply work on this one. Okay, so you can just use this one to look above or below. Okay, you can also look, just keep it at any particular height, and you can just rotate your head in order to understand this in a better way. Okay, and if you will just, let me show one more thing. Yeah, and if you will just use the ASWF on your keyboard, then it will help you to move like this. So you will have to go with the combinations. So try to go with the combinations always. Okay, so don't go with a single thing. Okay, next, I need to orbit the whole scene. So you can see I have already used the orbit thing. Like I have used the right mouse button and then the ASW key, W, like the keys on the keyboard. Okay, ASW and T. Okay. Okay, so guys, I think I have already answered all the questions. So in case if you have any kind of questions, then you can simply ask that question in the like comment section itself. Okay, and if you want to join our classes, then I will just give a link in the description. You can just fill the form over there and you can join our classes. And over here you can see this is our poster. The course fee for this is 4,000. If you want to get the recorded session, then that is in 499. And the most basic question, when is the class going to start? So it's going to start on 14th of the June. Okay, so new batch is starting on the 14th of the June. We have the schedule over here. हम लोग का जो टेक्ला का बैच है वो 4th जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड जो नया बैच हम लोग का स्केचअप का है वो 14 से हो रहा है. प्राइमावेरा का जो है वो हमारा 11th जून से स्टार्ट हो रहा है. सो इस तरीके से हम लोग का जितने भी कोर्सेज होंगे और जितने भी क्लासेज होंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे. हम लोग रेगुलरली पोस्टर्स रिलीज करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट मिलेंगे. टाइप लाइक आपको इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मिल सकते हैं. देन आपको जब हमारे कोर्सेज का कोई अपडेट होगा तो वो मिल जाएगा. हमारे कोर्सेज पर अगर कोई ऑफर होता है तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है. तो आप यहाँ से जो फेसबुक पेज पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलरली मिलती रहेंगी. एंड फॉर्म जो है वो आपका जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आपको ऑलरेडी ये लिंक है. इस लिंक पे आपको बस क्लिक करना है एंड एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा. अगर आपको स्केचअप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे
स्केचअप के लिए ऑप्ट करेंगे। अगर आपको कोई और कोर्स ज्वाइन करना है, लाइक आपको एस्टिमेशन ज्वाइन करना है, तो आप एस्टिमेशन ऑप्ट करेंगे। आपको कॉम्बिनेशन ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आप सिविल सेंटर स्टूडेंट क्लब के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो सिविल सेंटर आपके लिए ऑफर कर रहा है। आपको जो भी पसंद है आप उसके लिए करिए, एंड जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। अभी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, इंटरनेट का इशू है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लेकिन आपको सीखने से नहीं रुकना है, आपको सीखते रहना है। एंड सिविल सेंटर हमेशा आपको गाइड करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछिए, एंड हम लोग उसका आंसर करेंगे। अगर किसी को पर्सनली मेरे से बात करना है तो यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ओके, सो गाइस आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोर्स कंटेंट के बारे में जानना है तो ये कोर्स कंटेंट से रिलेटेड मैं लाइव किया था, उसका भी मैं यहाँ पे डिटेल दे दूंगा। ठीक है, कि इस स्केचअप के लाइव क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो सिखाई जाएंगी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 35 टॉपिक्स हैं, लेकिन इन सब टॉपिक्स पे आप वन बाय वन अभी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक लिंक है जो दे दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस कोर्स के लिए प्रोसीड करेंगे। Okay, so guys, that was all from my side for today. If you have any other question, you can simply leave that in the comment section and I will cover that in the next live session. Thank you and have a nice day. And I hope that you are safe wherever you are and you are learning all the possible things